the NDA's poor performance now in Maharashtra. Maharashtra has also been key to the entire Lok Sabha picture. The analysis that many are now trying to deep dive into. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, in fact, has offered to quit his position. He's taken responsibility of NDA's performance in the state. He's offered to step down and work for the party instead. Reacting to his statement, though, Sanjay Raut of the Shiv Sena, he has dismissed Fadnavis's offer as a political gimmick. He's downplayed the statement that's coming from the Deputy Chief Minister. There have been tensions, though, within the NDA, and these tensions only continue to escalate. Top NCP sources have now revealed that 18 NCP MLAs from the Ajit Pawar faction reportedly are seeking to return to Sharad Pawar's camp. NCP MLA Sunil Tatkare, though, has denied and dismissed all of these reports of tension, saying that the MLAs remain united and that the Ajit Pawar faction is intact. So different reactions coming in, varied reactions coming in from Maharashtra on what the future of several constituents of Mahayuti and the Mahavikas Aghadi is going to look like. Listen in. अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचं आहे. त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधून मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी. ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है. मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं. While we discuss what's been ongoing in Maharashtra, the host of meetings taking place, remember Devendra Fadnavis was also to be in the national capital. He's left for New Delhi is what we're learning and will be meeting Home Minister Amit Shah. Now remember, the Union Home Minister has been at JP Nadda's residence the last so many hours. A series of discussions taking place in Delhi, and now we're learning that Devendra Fadnavis is also left for the national capital. We're being joined by Mayuresh on the phone line. Mayuresh, what more details can you send out? Tell us more about Devendra Fadnavis's plans after he came out to say that I'm no longer going to continue as the Deputy Chief Minister while taking moral responsibility for the BJP's performance in Maharashtra. Yes, after this particular press conference, there was a phone conversation happened between Amit Shah and Devendra Fadnavis. Today, Devendra Fadnavis was in Nagpur. He didn't attend the Maharashtra State Cabinet. He attended the Maharashtra State Cabinet via VC. But now he has left for the Delhi, and we have been given to understand that he will be staying back in Delhi today. And tomorrow there is a parliamentary board committee meeting of BJP, and after that meeting, a one-on-one meeting with Amit Shah is likely to happen of Devendra Fadnavis in Delhi. In that, they will be discussing the Maharashtra, the issues of Maharashtra, and also the demand which Devendra Fadnavis has made that to relieve him from the responsibilities which party has given him to stay in the government as a Deputy Chief Minister. And on that particular issue also the discussion will happen, and the final call will be taken whether Devendra Fadnavis will be relieved from all his duties of Deputy CM, and he will be given a free hand to work in Maharashtra. That needs to be seen into after tomorrow's meeting. Absolutely, and perhaps the central leadership also needs to look at the several versions that are being put out by, for example, Chief Minister Eknath Shinde and Ajit Pawar on what really led to this kind of a performance of Mahayuti in Maharashtra. But many thanks for breaking down all of those details for us. We're picking up a couple of other reactions as well. Let's quickly play them out. There's a possibility that there will be a cabinet expansion very soon. Was there also discussion in the... We did not discuss today. The Chief Minister and both the Deputy Chief Ministers should be together. They will discuss with the BJP High Command and they will take the appropriate decision. And sir, when you speak of of course, you won. NCP has gotten this one seat. There has been a performance by Eknath Shinde faction and BJP as well. But there are several questions that are being raised on the voting performance as compared to the previous election. We've seen Fadnavis also take a blame for it. We are analyzing everything there. We have in detailed discussion within core committee. So definitely soon I will brief to the press regarding whatever has happened. There are so many reasons for overall the total tally in the state of Maharashtra. So we will discuss. So what are the possible reasons for the performance? There are number of the reasons, not only one reason. There are number of reasons. But we are very much happy that India is forming the government soon at Delhi. So once that is being established, again we'll start Maharashtra.
and I'm quite confident in month of October and so we'll come back with the same majority what right now we have in Maharashtra. So there is speculation that there are people going in talking with Sharad Pawar camps. Nobody is talking. All NCP MLAs are with under the leadership of Dada, Ajit Dada very strongly with determination. Nothing else. Thank इस सीट पे जो है उद्धव ठाकरे ने कैंपेन किया, आदित्य ठाकरे ने किया, सबने किया, आपको हराने के लिए सबने किया, काफी व्यक्तिगत आरोप भी उन्होंने लगाया आप पर। नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप आज नहीं, वो तो लगाते हैं। उनके बदमाशी के कारण मुझे शिवसेना छोड़ना पड़ा। माननीय बाला साहब ने उनको काफी वक्त समझाया था, तेरे में और नारायण राणे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, आप दोनों भी एक विचार से काम करो, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक, ये उनका वाक्य था। मगर इसका खुद का स्वार्थ उनका है, इस वजह से मेरे से जो बर्ताव किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वो तो मेरा बॉस बन नहीं सकता है, मैं साहब भी मेरे बॉस थे और साहब को मैं कहा कि मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल के निकला। लेकिन आपको हराने की पूरी कोशिश की गई, पूरी तरफ से कोई छोड़ा नहीं है। हमारे जो महायुति है उसके अंदर के कई नेता जन से उन्होंने दोस्ती करके मेरे खिलाफ कारस्तान चालू किया। वो मुस्लिम वोट एक गट्टा मिलने से ये उनको 9 सीट मिले और ये उन्होंने जो गद्दारी की है पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ, उसका ये उनको बेनिफिट है। ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। आपके साथ ही केसरकर साहब ने बयान दिया, राउत साहब, मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं, उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहाँ तक कह दिया और कि फडणवीस के सहारे, मेरा एक जवाब पूरा हो, और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। ये चुनाव किस लिए हो रहा था? केंद्र सरकार के लिए हो रहा था, प्रदेश की यूनिट्स को उसमें सहयोग करना था। तो अगर प्रदेश में वो फेल्योर हुआ है तो फिर तो इसका मतलब केंद्र फेल हुआ है। तो देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देकर नैतिकता की याद दिलाई है नरेंद्र मोदी जी को। संविधान बदलने का जो आप मुद्दा तो नहीं था, उनको जो बोला गया था उस पर डिस्टर्बेंस हुआ, उसमें वो निर्णय सेट किया उन्होंने बताया, बार बार बताना, लोगों को लगा अरे बाबा साहब की घटना बदल रहे, जो होना ही नहीं है, लेकिन वो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसका भी फटका हमको पड़ा है। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के जो लीडर्स है, उन्होंने जो कुछ सर्वे लाया था, वो सर्वे बहुत गलत साबित हुआ। एक तो उनका सर्वे गलत साबित हुआ, उसके वजह से सीटें जो डिक्लेयर करनी थी जल्दी, उसको लेट हो गए। ये जो रणनीति से, और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें यहाँ पीछे लाने में, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हार की तरफ हमको लेके गया। आपका इंडिकेशन है कि क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी, बीजेपी के नेता ओवर कॉन्फिडेंट, उनको लग रहा था कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा, उनका सर्वे पूरी तरह से ये 4-5 मुद्दे पूरी तरह फेल हो गए। एकदम फेल हो गए, उसमें थोड़ा फेल तो हो ही गए ना। नहीं तो हमको भी उम्मीद थी 40 सीट तो इजीली हम क्रॉस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी 40 सीट क्रॉस करने में। लेकिन ये 2-3 चीजें जो है, लेट उम्मीदवार डिक्लेयर करना, अलायंस का जो कि घोषणा लेट करना, उसमें हमको तकलीफ जरूर हुई। Well, one thing is for sure, the MBA turnaround has given a jolt to the BJP Shinde-led Mahayuti in Maharashtra. That plays out and how Devendra Fadnavis takes it up in the national capital remains to be seen. Still, we are in a very quick break for now. We'll be right back with lots more on the other side. Be right back.